Well, there is no objection. Anyone can make a movie. Savarkar was a tall leader, a revolutionary. But I think the teaser released yesterday, it states that Netaji Subhas Chandra Bose, Shahid Bhagat Singh, and Khudiram Bose were inspired by Savarkar's ideology. I think that is historically incorrect. Because Netaji Subhas Chandra Bose, Shahid Bhagat Singh, and Khudiram Bose were part of the left movement. They were revolutionaries and they were willing to sacrifice their life for freedom of our nation. Whereas Savarkar, although he started his career with the freedom movement, but later on we observe, after he came back from the cellular jail, he had an attitude of compromise. Netaji Subhas Chandra Bose never compromised with the British. And Netaji was the only leader till date who was inclusive and secular. He was the only leader, again to date, who could unite all communities, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhas, Jains, as Bharatiyas. But Savarkar was opposed to this. Savarkar's Hindutva was diametrically opposite to Netaji Subhas Chandra Bose's inclusive secular ideology. So how can you ever state that Netaji was influenced and inspired by Savarkar? He actually condemned both the Hindu Mahasabha and the Muslim League. If you read Netaji's own writings in the Indian struggle, it is very clearly stated. He has stated that for the freedom movement, you cannot expect anything, neither from the Hindu Mahasabha nor the Muslim League. So he completely was against this concept of Hindutva. He believed in an inclusive, egalitarian society where there is equality for all, no gender bias, and no caste distinction. So his ideology seems completely opposing Savarkar's view. But nevertheless, Savarkar was a big leader in his own right. But you need not compare Savarkar with Netaji Subhas Chandra Bose, Shahid Bhagat Singh, or Khudiram Bose. Is distorting history. What is it? You see, Veer Savarkar was a great personality. But in the film, the teaser that was released yesterday states that Netaji Subhas Chandra Bose, Khudiram Bose, and Shahid Bhagat Singh were influenced by Veer Savarkar. This is distorting facts of history. Now, anybody can make a film on Savarkar or whoever, but in order to raise a controversy so that the film gets added mileage, I think that is an offense. So I would request Randeep Hooda, who is, of course, a very famous actor and director, he should not distort history. Because, I think we have a responsibility towards the youth of our nation. So we cannot teach wrong history to the youth of our nation. Because the future of India depends on the youth. So if the youth, they learn distorted history, then what would be the future of India be? So I think Mr. Hooda, good sense would prevail and he would rectify the distortions that is being projected in his film on Veer Savarkar.
See, filmmakers, they are free to make a film on any personality, on any subject. There is freedom of speech. But I don't think they have freedom to distort history. To project the wrong history is a criminal offense. So I would appeal to all filmmakers, including Mr. Hooda, that please project the true character of Veer Savarkar. Don't mix it up with other national icons like Netaji Subhas Chandra Bose, who was the only inclusive secular leader that India has ever produced. And today, what we find in politics, vote bank politics, divisive communal politics, Netaji Subhas Chandra Bose was completely against communal politics. But I cannot say the same thing about Veer Savarkar. जो टीजर रिलीज हुई है उसमें क्या दिखाया गया है जो इधर इस परिवार का ऑब्जेक्शन है? देखिए, ये फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, इसमें दिखाया जा रहा है कि वीर सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और खुदीराम बोस को इन्फ्लुएंस किया था, इंस्पायर किया था। तो ये तो गलत इतिहास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। तो वीर सावरकर जी का जो आदर्श था हिंदुत्व, हिंदू महासभा के साथ वो जुड़े हुए थे। तो नेताजी का जो अपना खुद जो उनका जो किताबें है इंडियन स्ट्रगल, उसमें खुद नेताजी ने बताया ये आज़ादी का लड़ाई में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बताया ये वीर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी का लड़ाई में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये तो नेताजी का खुद वार्ता है। नेताजी इतिहास आप देखिए, उनका आजाद हिंद फौज में जो 60,000 सैनिक था, उसमें एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, सिख ईसाई नहीं था। तो कौन था? 60,000 सैनिक भारतीय था। तो नेताजी का जो भारतीय कॉन्सेप्ट उन्होंने जो आजाद हिंद फौज में दिखाया, ये तो सावरकर जी का जो आदर्श है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इसके खिलाफ है। आपने कहा है कि इस मूवी जो सावरकर जो बनी है वो उसको हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के दिखाया गया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास जैसा हुआ था उसी हिसाब से ये जो फिल्म जो बनाते हैं, आपको इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मगर बेसिक फैक्ट्स जो है वो तो आपको दिखाना चाहिए। अब फैक्ट्स जब डिस्टॉर्शन हो रहे तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। तो हम लोग का एक कर्तव्य है, जो फिल्म बनाते हैं बड़ा डायरेक्टर एक्टर्स लोग, तो उनका भी एक कर्तव्य है जो आप सही इतिहास को दिखाइए। जो सावरकर मूवी में जो बताया जा रहा है ये तो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है, इतिहास को एक गलत इतिहास दिखाने का एक प्रचेष्टा है। जो डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री जो दिखाते हैं उनको इनसे क्या कहना? देखिए, हम लोग को तो राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू मेक अ फिल्म तो है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अभी आपको कुछ भी आपको दिखा सकते, मगर इतिहास को जब आप गलत तरीका से दिखाते हैं, इसका कोई राइट किसी को ये हक नहीं है। इतिहास को डिस्टॉर्ट करने का हक कोई भी फिल्म डायरेक्टर व एक्टर का नहीं है, किसी का नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिल्म बनाइए, सावरकर जी के ऊपर बनाइए, नेताजी के ऊपर बनाइए, मगर इतिहास को सही ढंग से आप दिखाइए। इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मगर आप बेसिक फैक्ट्स जब आप बदल देंगे तो फिर वो पर्सनैलिटी बदल जाएगा। तो जो पर्सनैलिटी सावरकर जी का जो पर्सनैलिटी था, उस हिसाब से आप फिल्म बनाइए। हम लोग सब देखेंगे, फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे। मगर अब जब गलत
इतिहास दिखाएंगे तो उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और युवा पीढ़ी को जो गलत इतिहास समझाने का दिखाने का कोशिश हो रहा है, ये पूरा देश को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। परिवार की तरफ से हुडा फिल्म निर्माताओं को जो ये फिल्म बनाए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करेंगे? देखिए, मिस्टर हुडा तो एक बहुत फेमस एक्टर डायरेक्टर है, काफ़ी फिल्म उन्होंने बनाया। तो वीर सावरकर जी के ऊपर आप फिल्म बना रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर उनका जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आप फिल्म बनाइए। अब नेताजी व शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस का तो ज़रूरत नहीं है सावरकर जी के ऊपर फिल्म करने के लिए, कारण उनका जो आदर्श था वो एकदम अलग था। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.